Hello students, once again I am Dr. Shamsur Rahman, your engineering mathematics teacher. Today I am going to discuss you coefficient of variation. Before starting the chapter, the objective of this chapter is to define the coefficient of variation, analysis of frequency distribution with equal mean but different standard deviation or variance. इस क्लास की तकमील पर आप काबिल हो सकेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैसे डिफाइन किया जाता है, इसका एनालिसिस करें जब मीन बराबर हो और स्टैंडर्ड डिविएशन अलग अलग हो या वेरिएंस अलग अलग हो. सो वी आर डिस्कसिंग वन बाय वन. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज डिफाइंड एज standard deviation divided by mean into 100 is called coefficient of variation. coefficient of variation की वजाहत की गई है कि standard deviation divided by mean into 100. Analysis of frequency distribution. The set having greater coefficient of variation is said to be less consistent than the other. The set having lesser coefficient of variation is said to be more consistent than the other. If the two frequencies have equal mean, then the series with greater standard deviation or variance is to have called more variable than the other. Also, the series with lesser value of the standard deviation or variance is said to be more consistent than the other. अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है तो वो डेटा लेस कंसिस्टेंट होगा दूसरे के मुकाबले में. जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा दूसरे के मुकाबले में. अगर दो सीरीज के मीन बराबर हो तब जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा होगा उसके वेरिएबल्स ज्यादा होंगे. अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो तो उसे ज्यादा कंसिस्टेंट कहेंगे दूसरे के मुकाबले में. Let us see the example. The run scored by the two batsmen A and B in 9 consecutive matches are given below. A 85, 20, 62, 28, 74, 5, 69, 4 and 13. B 72, 4, 15, 30, 59, 15, 49, 27, 26. Who is the better score getter and who is more consistent? The answer is here. Number of the matches equal to 9, that means small n equal to 9. We can arrange in column wise, that means the score of A equal to 85, 20, 62, 28, 74, 5, 69, 4, 13. Sum of these is 360. Find the mean, that means mean equal to 1 by n summation I equal to 1 to 9 summation xi, that means 360 divided by 9, which is 40. That means the mean is 40. So we find xi minus 40, that means 85 minus 40, that means 45. 20 minus 40, that means minus 20. Next 22 minus 12, 34 minus 39, 29 minus 36 minus 27. Square this column, we get, and adding these values we get 8300. So we can calculate standard deviation of A, that means under root 1 by n summation I equal to 1 to n xi minus x bar ka whole square, that means under root 8300 divided by 9, we get 30.37.
Similarly, for the batsman B inning, that means 72, 4, 15, 30, 59, 15, 49, 27, 26. Adding these values, we get 297. Calculate the mean, that means mean of B equal to 33. Then calculate y minus 33, that means uh, put b equal to y, that means 72 minus 33, that means 39. 4 minus 33, that means 29. And next minus 18 minus 3, 26, 18 minus 18, 16 minus 6, 7. Square this column, we get, and adding this column, we get 4036. Calculate standard deviation of B, that means 1 by n, I equal to 1 to n, yi minus y bar ka whole square, that means 21.17. Calculate coefficient of variation of A, that means standard deviation divided by mean into 100, that means 30.37 divided by 40 into 100, that means 75.97, and coefficient of variation of B equal to 64.15. So we result the draw. That means since the mean of A is greater than the mean of B, it shows that A is a better score for the calculation of consistency. Compare the coefficient of variation. The coefficient of variation of B is less than the coefficient of variation of A. It means that B is more consistent than A. Thus, even though A is better player, but he is less consistent. इस सवाल में देखें, दो बैट्समैन दिए हुए हैं, इन दोनों की इनिंग्स दी हुई है 9 कॉन्जिक्यूटिव मैचेस की, और हमें निकालना है कि कौन सा बैट्समैन बेटर स्कोरर है और कौन सा कंसिस्टेंट है. आंसर देखिए, नंबर ऑफ द मैचेस यहाँ पर 9 दिए हुए हैं. तो सबसे पहले हम मीन निकाल लें ए का. मीन का फार्मूला होता है x bar equal to 1 by n, I equal to 1 to 9 xi, that means ये निकल कर आएगा 40. इस तरीके से x minus 40 वाला कॉलम निकाल लें, इसका होल स्क्वायर कर लें, ऐड कर लें, ये निकल कर आएगा 8300. स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ a निकाल लें. स्टैंडर्ड डिविजन का फार्मूला है अंडर रूट 1 by n, x I equal to 1 to n, xi minus x bar का होल स्क्वायर, जो हमें निकल कर आएगा 30.37. अब मीन निकाल लें बी का, जो निकल कर आएगा 33. तो y माइनस 33 कर लें, दैट मीन 72 माइनस 33 यानी 39 आएगा. इसका ये कॉलम निकल कर आए, इस कॉलम का होल स्क्वायर कर लें, उसके बाद ऐड कर लें, ये आएगा 4036. स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ बी निकाल लें. स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ बी निकल कर आएगा 21.17. नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डिविजन डिवाइड बाय मीन इनटू 100, ये निकल कर आएगा ए का 75.93. इसी तरीके से बी का निकल कर आएगा 64.15. कंपेयर कर लें, क्योंकि ए का औसत बी के औसत से ज्यादा है, इससे जाहिर होता है कि ए बेहतर स्कोरर है. दूसरा रिजल्ट देखें कि चूंकि द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी कम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए से, ये जाहिर करता है कि बी जो है मोर कंसिस्टेंट है. इस तरह अगरचे ए बेहतर खिलाड़ी है लेकिन कम कंसिस्टेंट है. Let's review the point discussed. In this class we have discussed how to find the coefficient of variation
for grouped and ungrouped data, and analysis the frequency distribution. खुलासा देखें, आइए ज़ेर बहस निकात का जायजा लें। इस क्लास में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का डिस्कशन किया है, उसके बाद हमने डेटा का एनालिसिस भी किया है, क्विज देखें। What is the coefficient of variation of a sample that has a mean of 20 and a standard deviation of 2? 100%, 10% and minus 100%. Put this value in the formula. Coefficient of variation equal to standard deviation divided by mean into 100. We get 10%. Next question. Which scenario will give the coefficient of variation of 30%? A mean of 10 and standard deviation of 3, mean of 4 and standard deviation of 16, mean of 30 and standard deviation of 15, and mean of 3 and standard deviation of 3. We calculate mean of 10 and standard deviation of 3. In the last, you can see the exercise in this video. You will read it just by pause the video and try to solve this exercise in your fair copy. For any question, for any doubt, you can contact me. Stay home and stay safe. Thank you.